Hello my dear viewers, my name is Anowar Barbhuiya and I welcome you to my channel Age with Physics. We are studying magnetism and matter in class 12 physics. So in last class we have studied the magnetic field. We have studied the expression for magnetic field at any point on the axial line of a bar magnet, as well as we have derived the expression for magnetic field at any point on the equatorial plane of the magnetic dipole. So now in this class we will study torque experienced by a magnetic dipole in a uniform magnetic field, and then we will derive potential energy of a magnetic dipole in a uniform magnetic field. तो ये दोनों डेरिवेशन भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दोनों उसका डेरिवेशन और इधर का डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, खाली वो चार्ज को लेके है और ये मैग्नेटिक पोल्स को लेके है. ओके, शुरू करते हैं. सो हमें करना क्या है? टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल. दैट इज मैग्नेटिक डायपोल. बेसिक फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? बार मैग्नेट है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क. कंसीडर अ मैग्नेटिक डायपोल विद पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल m. तो थोड़ा याद करा देते हैं आप लोगों को, अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल याद नहीं आ रहा है तो. Suppose we have a positive charge plus q and a negative charge minus q, and these two charges are separated by a length, a distance. The distance is 2l. So these two charges equal in magnitude, opposite in polarity, separated by a finite distance apart, will constitute an electric dipole. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल. इस इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें डायपोल को रखना है. कैसे रखना है? तो हाइपोथेटिकली ये साइड क्या होता है? पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है. तो अगर हम बोलेंगे ये साइड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास में हम लोगों को नेगेटिव चार्ज रखना है और नेगेटिव के साइड में पॉजिटिव चार्ज रखना है. तो पॉजिटिव रखेंगे, देयर विल बी अ फोर्स, दैट विल बी द फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज. तो ये हो गया हमारा प्लस क्यू, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज. इधर क्या लगता है? फोर्स, दैट फोर्स इज फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज. नाउ these two forces are equal in magnitude. ये जो दोनों फोर्सेस है ये equal in magnitude है, opposite in direction है, and there is these two forces are acting in different line. इसका मतलब ये इस लाइन पे एक्ट कर रहा है, दूसरा इस लाइन पे एक्ट कर रहा है. इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, इसकी वजह से यहाँ पे एक टॉर्क पैदा होता है. व्हाट इज द टॉर्क? दैट टॉर्क इज P E sin थीटा. ठीक है, तो यही डेरिवेशन हमें यहाँ पे रिपीट करना है. सो वी आर हैविंग ए बार मैग्नेट. ये क्या है? एक बार मैग्नेट है. तो हाइपोथेटिकली ये साइड क्या होगा? नॉर्थ पोल, ये साइड साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है. तो इसका मतलब ये साइड नॉर्थ है, तो इधर हमें ये पोल कौन सा पोल होगा? दिस पोल विल बी साउथ पोल. तो ये पोल कौन सा पोल होगा? दिस विल बी नॉर्थ पोल. नाउ पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इज m. तो ये जो पोल स्ट्रेंथ है, इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है? m है, तो इसका भी पोल स्ट्रेंथ कितना होगा? m होगा. नाउ देयर विल बी अ फोर्स. Now how to, what is electric field intensity? Electric field intensity is electrostatic force per unit charge. ऐसे अगर हम लोग magnetic field intensity भी बोलेंगे, then it is magnetic force, there is force due to magnetic field per unit pole strength divided by m. So what is the expression for magnetic field? So we can say that what is the force? That force is given as mb. So it is the pole strength of the pole. And B is the strength of magnetic field or intensity of magnetic field. यहाँ से अगर हम फोर्स को निकालते हैं तो क्या होता है? QE. तो बिल्कुल सेम है. So what will be the force on north pole? Force on north pole अगर हम लोग बोलेंगे then it will be mb vector. So this force, that is mb vector, is along the magnetic field. ये किधर है? Magnetic field के डायरेक्शन पे है. और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स स्ट्रेंथ कितना है? m है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है? b है. इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो भी mb वेक्टर है. तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस भी क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है या नहीं है? mb वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने से आपको कितना आएगा? mb ही आएगा. इसका मतलब द मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, ऑपोजिट इन डायरेक्शन. इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो दे विल कंस्टिट्यूट ए कपल. तो दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, and the two forces are acting in different lines, so there will be a torque. So that torque we are going to find out. Now torque को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? torque को निकालने के लिए हमें perpendicular distance भी चाहिए. तो हम लोग मान लेते हैं ये perpendicular distance है. ठीक है, so this is the perpendicular distance.
अगर मान लीजिए ये n है तो इसको कुछ एक नाम दे देते से m, कैपिटल M नहीं और एक m आएगा, c मान लीजिए. So what is the direction of electric dipole moment? Direction of electric dipole moment is from, ये अगर मान लीजिए नेगेटिव है, so the direction of electric dipole moment is from negative to positive charge and denoted as p vector. So the direction of electric dipole moment is from negative to positive charge denoted as p vector. The direction of magnetic dipole moment, the direction of magnetic dipole moment, magnetic dipole moment को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से, so M vector. So the direction of magnetic dipole moment is from south pole to north pole. And we have to consider that the magnetic dipole moment is making an angle theta with the direction of magnetic field vector. So magnetic dipole moment vector ये हो गया आपका magnetic dipole moment vector और ये हो गया magnetic field vector. इनके बीच में एंगल कितना है? एंगल थीटा. तो एक बार देख लीजिए. Consider a magnetic dipole with pole strength of each pole m. हर एक पोल का पोल स्ट्रेंथ कितना है? m है. लेंथ कितना है? 12 है. इसका मतलब हमारा जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का लेंथ जो है 12 है. So the length of this magnet is 2L. Length of magnet is 2L. Is placed in a uniform magnetic field. इसको हमने एक uniform magnetic field के अंदर रखा है such that M vector makes an angle theta with B vector. तो magnetic moment vector जो है वो magnetic field के साथ एंगल कितना बनाता है? थीटा बनाता है. Now I can say that the force on north pole, the force on north pole and south pole of magnet is, what is the force? The force on north pole and south pole of magnet is mb vector. अब ये जो दोनों forces हैं, these two forces are equal in magnitude. These two forces are equal in magnitude. Opposite in direction, opposite in direction. दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, opposite in direction and are acting in different lines, acting in different lines. और ये अलग अलग लाइन पे एक्ट कर रहा है, acting in different lines. Hence constitute a couple. इसका मतलब इससे क्या बन जाएगा? एक कपल बन जाएगा. Hence constitute a couple, जिसकी वजह से ये एक कपल बनेगा. कपल अपन मैंने पढ़ा था, नहीं पढ़ा अभी सुन लो. दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग इन डिफरेंट लाइन will form a couple. What is the net force acting on dipole? The net force acting on dipole is 0. Acting on dipole is 0. The net force acting on dipole is 0. क्यों 0 है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो वेक्टर सम करेंगे तो क्या होगा? mb वेक्टर माइनस mb वेक्टर. So the net force is 0. So the net force acting on dipole is 0. But the forces at every point, the forces at every point on the dipole, every point on the dipole is different. The forces at every point on the dipole is different. Hence, a torque acts on it. The net force acting on dipole is 0. तो dipole के ऊपर जो net force लगेगा वो net force कितना है? 0 है. But the forces at every point on the dipole is different. So dipole का अगर हम कंसीडर करेंगे dipole का एक्सिस है तो हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो अलग अलग फोर्सेस लगेगा. So but the forces at every point on the dipole is different. Hence a torque acts on it, जिसकी वजह से एक torque लगेगा. So what will be the magnitude of torque? The magnitude of torque will be equal to magnitude of either force, magnitude of either force multiplied by the perpendicular distance, multiplied by the perpendicular
distance between anti-parallel forces. So the magnitude of torque will be equal to magnitude of either force multiplied by the perpendicular distance between anti-parallel forces. So the magnitude of torque, if we say if we denote it as tau, so tau denotes torque will be equal to magnitude of either force. किसी भी एक force का magnitude लेना है. So mb vector है, इसका magnitude लेने से कितना आएगा mb. So the magnitude of either force is mb multiplied by the perpendicular distance between anti-parallel forces. तो एक force हमारा यहाँ पे लग रहा है mb vector, दूसरा force किधर लग रहा है, इधर लग रहा है. That force is mb vector. तो इसका जो लाइन है, कौन सा लाइन है, इस लाइन पे लग रहा है. इसका कौन सा लाइन है, इधर है. तो इसका मतलब इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम बोलते हैं nc, ऐसा है कि नहीं है. तो ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है. ये जो लेंथ है, व्हाट इज दिस लेंथ, दिस लेंथ इज 12. नाउ यहां से अगर हम sin थीटा बोलेंगे, व्हाट विल बी sin थीटा, इट इज परपेंडिकुलर, दैट इज nc डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज 12. सो व्हाट विल बी nc, nc will be equal to 2l sin theta. nc will be 2l sin theta. So what is the perpendicular distance between antiparallel forces? It is 2l sin theta. Now इस टॉर्क को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m multiplied by 2l अगर हम लोग कर लेंगे into b sin theta. So m is magnetic pole strength multiplied by the magnetic dipole length. So pole strength multiplied by the length of dipole is magnetic moment. So it is denoted as capital M B sin theta. So the magnitude of torque is mb sin theta. So this is the magnitude. If you write in vector form, this torque can be represented as sin theta है. So it will be m cross b. So vector form में m cross b है. Magnitude is mb sin theta. ठीक है, चलिए तो इसी में गोल करके रखा हो, आपके एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है. So this is all about the torque acting on a magnetic dipole placed in a uniform magnetic field. आप इसको जल्दी जल्दी लिखिए, पोज करिए और लिखिए. हो गया. So next topic is potential energy. Potential energy of a magnetic dipole. Potential energy of a नहीं लिखने से भी चलेगा. Potential energy of magnetic dipole in a uniform magnetic field. Introduction तो आपका बिल्कुल सेम है. आप लोगों ने लिखा है, नहीं लिखा है? I hope लिख लिया आप लोगों ने. नहीं लिखा है तो जल्दी लिखिए. Consider a magnetic dipole with pole strength of each pole as m and length of dipole is 2l is placed in uniform magnetic field b vector such that m vector makes an angle theta with b vector. ये तो आपका बिल्कुल सेम है, आपका फिगर भी सेम ही है. Now इस डायपोल की वजह से दो फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स इक्वल है, ऑपोजिट है, एक्टिंग इन डिफरेंट लाइन. तो अल्टीमेटली कपल बनेगा, कपल से टॉर्क लगेगा. ये सारे कहानी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करना है. सो यू कैन सिंपली राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क
acting on dipole is tau is equal to mb sin theta. So this is the magnitude of torque acting on dipole. Now ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क की वजह से आपका डायपोल किधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये फोर्स इधर खींचेगा, ये फोर्स इधर खींचेगा, तो रिजल्टिंग आपका डायपोल ऐसे ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा. That means the dipole will try to rotate in clockwise direction. So you can write this torque will try to rotate the dipole, will try to rotate the dipole along the magnetic field. तो ये टॉर्क की वजह से ये क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि मैग्नेटिक डायपोल को ऐसे घुमा के कहां पे लेके आ जाए, in the direction of magnetic field. So this torque will try to rotate the dipole along the magnetic field. To rotate the dipole, against this torque, a counter torque must be provided. A counter torque must be provided. इसका मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक टॉर्क लगा है, इस मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से आपका डायपोल किधर घूमने की कोशिश करेगा, the dipole will try to rotate in clockwise direction, means it will try to align along the direction of magnetic field. To rotate the dipole against this torque, means इस टॉर्क के उल्टा रोटेट करना है, तो मैग्नेटिक टॉर्क किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे हमें क्या करना है, इसके उल्टा मूव करना है. To rotate the dipole in a direction opposite to this torque, to rotate the dipole against this torque, or to rotate the dipole against this torque, a counter torque must be provided. तो हमें क्या करना पड़ेगा, काउंटर टॉर्क देना पड़ेगा, मींस उल्टा टॉर्क देना पड़ेगा. So you can write the work done in rotating the dipole, the work done in rotating the dipole for a displacement d theta is, means अगर हम लोग एक छोटा सा एंगल कंसीडर करेंगे d theta, so what will be the work done in rotating the dipole. So हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, work done in rotational motion is given as tau d theta. अगर एंगल छोटा है then work done will be small work done, so dw will be equal to tau d theta. So the work done in rotating the dipole is given as dw will be equal to tau into d theta. So next we can find out total work done. Total work done in rotating the dipole. Total work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 1 to theta 2. Theta 1 to theta 2 is. So what will be the total work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2? Theta 1 का मतलब क्या, इनिशियल एंगल है, theta 2 का मतलब क्या, फाइनल एंगल है. तो मान लीजिए आपका डायपोल कैसा है, ऐसा है, तो इसका इनिशियल एंगल क्या है, इनिशियल एंगल इस थीटा है. इसको रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करके उल्टा रोटेट करके लेके जाना है. तो इनिशियल एंगल जो है थीटा 1 है, फाइनली कहां तक रोटेट करके लेके आना है, मान लीजिए थीटा 2. काट रहा है क्या बुझना. So total work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2 is, so what will be the total work done? Total work done will be W, it will be integration of dW. हमें एंगल कहां से लेना है, थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक. So it will be equal to integration of tau d theta. Integration of dW is tau d theta. Angle is from theta 1 to theta 2. So this can be written as integration. What is this torque? It is magnetic torque mb sin theta. Angles are from theta 1 to theta 2. So integration करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, d theta. So it will be equal to mb आपका कांस्टेंट है, निकल जाएगा. इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा from theta 1 to theta 2. इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा sin theta d theta. Integration of sin theta is minus cos theta. So mb
Integration of sin theta is minus cos theta. The limits are from theta 1 to theta 2. So it will be equal to mb upper limit. So it will be minus of cos theta 2 minus minus will become plus cos of theta 1. So this is the magnitude of torque. So this is the total work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2. If the dipole is initially perpendicular to magnetic field, and if it is rotated by an angle theta, then if the dipole is initially perpendicular to magnetic field and if it is rotated by an angle theta, then what will be theta 1? Theta 1 will be equal to pi by 2, and what will be theta 2? Final angle will be equal to theta. तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कीजिए क्योंकि हमें और स्पेस चाहिए. हो गया? So therefore total work done W will be equal to उधर से mb ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ cos थीटा 2. सो cos थीटा 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? थीटा प्लस cos of theta 1. So plus cos of theta 1 is cos of pi by 2, that is cos 90. The dipole is initially aligned at 90 degree. So it will be mb cos 90 कितना है? cos 90 is 0, सबको पता है. So it is cos theta plus 0. इसका मतलब total work done is minus mb cos theta. This work done is stored as potential energy of dipole. This work done is stored as potential energy of dipole. So work done in rotating the dipole is stored as potential energy of dipole. Therefore potential energy will be equal to minus mb cos theta. So this is the potential energy of dipole. तो यहाँ पे क्या है? cos theta है. m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैपिटल B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उसके साथ cos थीटा है. तो इसका मतलब वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट होगा? डॉट होगा या फिर क्रॉस होगा? सो cos थीटा कम्स विद डॉट प्रोडक्ट, sin थीटा कम्स विद क्रॉस प्रोडक्ट. इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट होगा. So what will be the potential energy? Potential energy will be minus m vector dot b vector. So this is the potential energy of dipole. ठीक है? तो यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए. आपका डेरिवेशन खत्म है. नोट्स बोल के लिख लीजिए. पहला, when m vector and b vector are anti-parallel. एंटी-पैरेलल का मतलब क्या है? एंटी-पैरेलल का मतलब उल्टा है. where m vector and b vector are anti-parallel का मतलब क्या है? उल्टा है. एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, ठीक है? when m vector and b vector are anti-parallel, then theta will be equal to how much? Theta will be equal to 180 degree. अगर theta 180 degree है, therefore potential energy U will be equal to minus
mb cos थीटा. सो cos 180 कितना होता है? cos 180 डिग्री इज -1. तो इसका मतलब ये हो जाएगा mb. सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. So when M vector and B vector are antiparallel, then potential energy will be maximum. The dipole is at stable equilibrium. The dipole is at stable equilibrium. तो इससे आपका डायपोल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा. सेकंड, when M vector and B vector are parallel. Parallel का मतलब क्या है? In the same direction. इसका मतलब M vector B vector they are in the same direction. Then what will be the value of theta? Theta will be equal to 0 degree. अगर theta 0 होगा, therefore potential energy U will be equal to minus mb cos 0. cos 0 कितना है? 1 है. तो इसका मतलब minus mb. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बी minimum. So you can say that the dipole is at unstable equilibrium. The dipole is at unstable equilibrium. तो ये याद रखना, ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में याद आता है, मिसयूज होता है. ठीक है. So this is about today's class. ऐसे पसीना मुझे थोड़ा ज्यादा आता है और गर्मी है, फैन चला नहीं सकते. फैन चलाने से आप लोगों का वीडियो के बीच में बहुत सारा अच्छा खासा साउंड आता है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? टॉर्क डिराइव किया. व्हाट इज द टॉर्क? द इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क इज टाउ, इट इज p sin थीटा. व्हाट इज द मैग्नेटिक टॉर्क? इट इज mv sin थीटा. Then we have derived the expression for potential energy. So what is the electrostatic potential energy? It is minus p cos theta. What is magnetic potential energy? It is minus mb cos theta. एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर है, खाली आपका p के जगह पे m होगा और b के जगह e के जगह पे b होगा. तो बस इतना ही चेंज होता है. डेरिवेशन का स्टेप्स भी बिल्कुल सेम है. So this is all about today's class. In coming class we'll meet with one more derivation, that is magnetic field due to a magnetic needle in a uniform magnetic field. Till then आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए. थैंक यू, बाय बाय.